Accounts Receivable Management, Part 6, Module 155, Financial Management. We are discussing credit policy. The accounts receivables management is actually about the credit policy. We have discussed several aspects of credit policy, about the credit period, the discount period, and the benefit that we can get by extending the credit. हमने ये बात डिस्कस की कि क्रेडिट इज एन इंसेंटिव. जब भी कोई बिजनेस, कोई कंपनी क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करती है तो उससे बायर्स के लिए एक इंसेंटिव क्रिएट होता है, एंड दिस इंसेंटिव एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू more profit, more contribution margin because of increase in sales. सेल्स के बढ़ने के साथ साथ जहाँ एक तरफ हमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन या एडिशनल प्रॉफिट हासिल होता है, उसके साथ साथ हमारे पास एडिशनल रिसीवेबल की कॉस्ट भी बढ़ती है. एक और एलिमेंट जो रिसीवेबल्स के बढ़ने से बढ़ जाता है, जो हमारी एक्सपेंसेस या कॉस्ट में इजाफा करता है, दैट इज बैड डेट्स. Bad debts are generally calculated as a certain percentage of the amount of credit sales or the amount of average receivables. यानी अगर क्रेडिट सेल बढ़ेगी तो बैड डेट्स भी बढ़ जाएंगे. अगर एवरेज रिसीवेबल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, जो कि क्रेडिट सेल के बढ़ने की वजह से डेफिनेटली बढ़ेगी, तो हमारे बैड डेट्स भी बढ़ जाएंगे. यानी अगर बैड डेट्स भी बढ़ जाते हैं तो हमें अपनी क्रेडिट पॉलिसी की कैलकुलेशन के अंदर ये देखना है कि बाय इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड, इफ वी आर गेटिंग मोर मार्जिन, then what is the increase in the amount of bad debts along with the cost of receivables. Let's have a look at this example, the data that we have. In this data we have again the same per unit selling price and variable cost and the contribution margin, and along with the existing sales, and that we are saying that credit period will be extended from 30 to 60 days. Which is likely to increase our sales by 25%, and that is 600,000 rupees or 60,000 units. Opportunity cost is 20%, but here we have got an additional element, and that is bad debts. Suppose our bad debts expense is 10%. So we will account for this calculation of bad debts, and we will add it in the total amount of our additional cost. The calculations will be similar. First, we'll calculate the additional contribution margin, and the formula is either you multiply the percentage of contribution margin with the additional sales, or we multiply the per unit contribution margin with the additional number of units that will be sold. So on your screen you can see that 60,000 units are the additional units, multiplied by 2 gives us the additional benefit in the form of contribution margin, that is 120,000. इससे हमारे additional receivables कितने arise होंगे? Again the same formula. We divide the amount of credit sales with the new receivables turnover ratio, or receivables turnover ratio. 360 divided by 60 is 6, and when we divide 600,000 by 6, हमारे पास आती है additional accounts receivables की amount, which is 100,000. The next step is to calculate the variable cost of these additional receivables, which is 80%. So multiplying 100,000 with 80%, we get an amount of 80,000. यानी 80,000 रुपीज़ वो एडिशनल रिसीवेबल्स हैं जिसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, एंड दैट कॉस्ट इज 20%. बट अलॉन्ग विद दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल रिसीवेबल्स, एक और चीज़ जो हमने इस दफ़ा कैलकुलेट करनी है वो हमारे बैड डेट्स की कॉस्ट है, एंड वी हैव टेकन 10% एज द बैड डेट्स कॉस्ट. सो ऑन 600,000 रुपीज़ सेल्स, if bad debts will be 10%, this amounts to 60,000.
So when we calculate the opportunity cost of additional receivables, which are 80,000, multiplying it by 20%, which is the opportunity cost percentage, we get additional opportunity cost as 16,000. And finally, we sum up the bad debts additional cost and the additional opportunity cost to get the total increase in the cost of the business because of adopting the new credit policy. So the sum is 16 plus 60, that is 76,000 rupees. यानी हमारा additional benefit 120,000 rupees है और हमारी additional cost 76,000 rupees है, जिसके अंदर opportunity cost of additional receivables भी शामिल है और हमारे bad debts की cost भी शामिल है. Now, the final step to compare the additional benefit with the additional cost. अगर additional benefit ज़्यादा है तो हम नई credit policy को accept कर लेंगे और अगर कम है benefit तो हम obviously नई policy reject कर देंगे. In this case, we can see that our additional benefit 120,000 is lot more than 76,000, which is the increase in the cost. So we would recommend that the new credit policy should be adopted even when there is an increase in the cost of bad debts of 60,000 rupees. And this has been the criterion of accepting or rejecting a credit policy. Now, the last part of our discussion on this credit policy calculations related issues is the factor of discount. हमने शुरू में बात की थी क्रेडिट टर्म्स की, जहाँ पर हमने कहा था 2/10 n/30 एक्चुअली शो करता है कि अगर हम 2% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो विद इन 10 days पेमेंट कर दें, और अगर हम 10 days में पेमेंट नहीं करेंगे तो 30 days में हमें पेमेंट करनी है, एंड दिस इज़ द नेट क्रेडिट पीरियड. सो प्रैक्टिकली व्हाट हैपन्स that there is a good percentage of our accounts receivables, our customers, who would like to avail that discount. यानी वो लोग जो 10 दिन के अंदर पेमेंट करना पसंद करेंगे so that they get a 2% discount or 3% discount, whatever is the rate. So what happens that for those customers, for those accounts receivables who would pay within 10 days, the credit period will be 10 days, और उनका जो receivables turnover होगा वो भी 10 days के हिसाब से कैलकुलेट होगा, that is 360 divided by 10, that is 36. And then this 36 will be considered only for that portion of accounts receivables who would avail a certain percentage of discount that we are offering. यानी जब हम डिस्काउंट की कैलकुलेशंस को क्रेडिट पॉलिसी में शामिल करते हैं तो हमें ये एंटिसिपेट करना है कि हमारे टोटल एडिशनल सेल्स में से कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो डिस्काउंट अवेल करेंगे. उनके लिए हम डिस्काउंट की जो परसेंटेज के ऊपर टाइम पीरियड है उसको कंसिडर करेंगे, और वो लोग जो डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे उनके लिए हम नॉर्मल क्रेडिट पीरियड को कंसिडर करेंगे. एंड द कैलकुलेशंस दैट वी विल डू विल बी साइमल्टेनियस, यानी एक तरफ हम डिस्काउंट पीरियड वाले लोगों की कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी तरफ उन लोगों की कैलकुलेशन करेंगे जिन्होंने डिस्काउंट अवेल नहीं किया है. एंड देन वील रीच टू द सेम कंक्लूजन whether our cost is more or our benefit is more. But finally, the important thing in this discount calculation is कि जैसे हमने opportunity cost को एक cost के तौर पर लिया और फिर हमने bad debts cost को भी उसके अंदर शामिल किया, इसी तरीके से जब एक कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है then discount also becomes a cost for the company. So हम इसको कंक्लूड करते हैं इस तरीके से कि जो डिस्काउंट है वो बैड डेट्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ मिलके एक तीसरी कॉस्ट बन जाता है, और हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर कर अपनी टोटल कॉस्ट को
देखेंगे और वो टोटल कॉस्ट हमारी फिर उसी तरह कंपेयर होगी हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ. एंड वी विल conclude by accepting or rejecting the policy. If the contribution margin is more, we'll go for the new policy, and if the contribution margin is less than the additional cost, we would reject that credit policy.